हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये बुक है द सीक्रेट एंड द ऑथर इज RHONDABYRNA, रोंडा। इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कहता है, यू आर ए मैग्नेट। कहता है, रिमेंबर दैट यू आर ए मैग्नेट attracting everything to you when you have gotten clear in your mind about what you want। मतलब अगर आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर है कि आपको क्या चाहिए, सो यू कैन अट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ। यू हैव बिकम a magnet to draw these things to you, and those things you want are magnetized to you in the return। The more you practice and begin to see the law of attraction bringing things to you, the greater magnet you will become। जितना ही आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, you will become day by day a greater magnet, because you will add the power of faith, belief and knowing। faith आपको करना होगा, belief and knowing, कि आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं। So you can start with nothing, and out of nothing and out of no way a way will be made। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, वहाँ भी रास्ता बनेगा। सो ये कहता है कि ये पेज नंबर 57 पर मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। सो ऑल यू रिक्वायर इज़ यू एंड योर एबिलिटी टू थिंक थिंग्स into being। everything that has been invented and created throughout the history of humankind। आज तक जितनी भी इन्वेंशन ह्यूमन काइंड में हुई है, जस्ट those has been began with one thought। सो आपका थॉट कितना इम्पोर्टेंट है। सोच, वो सोच से ही सारी चीज़ें होती है। सो फ्रॉम दैट वन थॉट a way was made and it is manifested from the invisible into visible। So trust the universe, trust and believe and have faith। I truly had no idea how long I was going to bring the knowledge of the secret into the movie screen। The author कह रहा है, I just held to the outcome out of the vision। Take the first step in the faith। You don't have to see the whole staircase, just take the first step। तो बेसिकली जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो आगे के स्टेप्स भी धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। करने का ये मतलब है। जैसे दोस्तों, फॉर एग्जांपल, थिंक ऑफ ए कार ड्राइविंग थ्रू द नाइट। द हेडलाइट्स ओनली गो 100 or 200 feet forward, and you can make it all the way from this place to that place driving through the dark, because all you have to see the next 200 feet। तो अगला 200 फीट हमें जब दिखता है और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी जर्नी तो, पूरी रास्ता तो दिखता नहीं है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें और आगे का रास्ता दिखता है। तो इसी तरह जीवन में भी आगे बढ़ते जाना है। थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी आती रहेगी, एकदम से सारा चीज़ नहीं दिखेगा, है ना। एंड हाउ द लाइफ टेंड्स टू अनफोल्ड बिफोर अस। वी जस्ट ट्रस्ट दैट द नेक्स्ट 200 फीट विल अनफोल्ड आफ्टर दैट, and the next 200 feet will unfold after that। your life will keep unfolding, है ना। 200 करके ये अनफोल्ड होता रहेगा। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल है, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। एंड इट विल इवेंचुअली गेट यू टू द डेस्टिनेशन ऑफ द वॉट एवर इट इज़ ट्रूली वांट, बिकॉज यू वांट इट। जैसे कि द फर्स्ट थिंग टू नो दैट यू फोकस इज ऑन लूजिंग वेट, यू विल अट्रैक्ट बैक हैविंग टू लूज मोर वेट। तो कहने का मतलब, इट इज़ वेरी रीज़न वाई डाइट्स डजेंट वर्क, बिकॉज लोग सोच लेते हैं कि वेट तो मेरा बढ़ रहा है। ऐसे करने से नहीं होगा। सोचो
कि ऑलरेडी अपने वेट को लूज कर दिया है। अब मोस्ट कॉमन थॉट क्या है कि मेरे को भी था, ऑथर कहता है कि फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई वेट गेन, दैट इज अ बिलीफ दैट डजेंट सर्व यू, एंड इन माई माइंड नाउ इट इज कम्प्लीटली bullshit. World as food is not responsible for putting on the weight. It is your thought that food is responsible for putting on weight that actually has food put on weight. Remember, thoughts are primary cause of everything. तो आपके सोच को, थॉट को बदलना होगा और सही डायरेक्शन में सोचना होगा, एंड रेस्ट द इफेक्ट्स फ्रॉम दिस थॉट्स. थिंक परफेक्ट थॉट एंड द रिजल्ट मस्ट बी परफेक्ट वेट. Let go of all these limiting thoughts. Food cannot cause you to put on weight unless you think it can. समझे? The definition of the perfect weight is the weight that feels good for you. No one else's opinion counts. It is the weight that feels good. तो मैं मार्क भी कर रहा हूँ इन चीज़ों को. You most likely know of someone who is thin and eat like a horse, and they proudly claim, I can eat whatever I want and I am always a perfect weight. So the genie of the universe says, your wish is my command, sir. So ये यूनिवर्स जो है वो आपके लिए एक जीनी का काम करेगा. इफ़ यू रियली वांट टू हैव समथिंग इन योर लाइफ, देन try to attract that thing. Your thought process must be aligned accordingly. Then you will start attracting those things in your life, and this universe will start working for you. To attract your perfect weight and body using the creative process, है ना, कुछ स्टेप्स इन द स्टेप वन इज आस्क, गेट क्लियर ऑन द वेट यू वांट टू बी. पहले क्लैरिटी तो आ जाएगी हमें क्या चाहिए. हैव ए पिक्चर इन योर माइंड ऑफ व्हाट यू विल लुक लाइक, कैसा दिखना चाहते हो, इसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए. व्हेन यू हैव बिकम द परफेक्ट वेट, गेट पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एट अ परफेक्ट वेट. इफ यू हैव them and look at often them, it will not get the picture of the body you would like to have the look and those often. तो पहले क्लियर पिक्चर बनाइएगा वो क्या चाहिए. द स्टेप टू इज बिलीव. यू मस्ट बिलीव यू विल रिसीव, है ना, एंड द परफेक्ट वेट इज योर्स ऑलरेडी. सो यू हैव टू थिंक दैट द वेट यू ऑलरेडी अचीव्ड. ये मत सोचिए कि अरे बहुत टफ है, कैसे होगा. होगा. आप सोचो कि आपने अचीव कर लिया है. So you must imagine, pretend, act like, if make believing that the perfect weight is yours. You must see yourself as receiving that perfect weight. Write out your perfect weight and place it over the readout of your scale, or don't weigh yourself at all. Do not contradict. अपने thought को contradict मत करना. Do not buy clothes at your current. When you feel that I am there, and you start purchasing the clothes which is according to your perfect weight, है ना, तो आपने पूरा मान लिया कि है, आई एम एट अ परफेक्ट वेट. वाई शुड आई बाय अ क्लॉथ विच इज डबल एक्सएल. आई एम एट अ परफेक्ट वेट. आई विल बाय एम और एल, एंड eventually you will be there, my brother and sisters. तो जब आपने आस्क किया, बिलीव किया, द थर्ड स्टेप इज रिसीविंग. आपको मिल जाएगा. सो यू फील गुड. You must feel good. You must feel good about you. This is important because you cannot attract your perfect weight if you feel bad about your body now. If you feel bad about your body, that is a powerful feeling, and you will continue to attract feeling bad about your body. You will never change your body if you're critical of it and will and find the fault with it, and in fact you will attract more weight to you. Praise and place every square inch of your body. ये important लग रहा है तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. Think about all the perfect things about you. As you think perfect thoughts, as you feel good about you, you are in the frequency of your perfect weight and you are summoning perfection. So the frequency को match करना है आपको. When you will sync with that frequency, you are there, you will get it. Believe me. So आज के लिए इतना ही है. कल आगे के चैप्टर्स को मैं समराइज और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा.
Thank you.